Yes, students, good morning. After your chapter of the literature, let us today study something about your writing skills. Let us study letter writing, just for a change. Okay, so broadly speaking, letters are of two categories: informal letters and formal letters. Informal letters are those letters which are written to friends, your relatives, acquaintances कौन होते हैं? जो आपके जान पहचान के होते हैं, उनसे फ्रेंडशिप अभी नहीं है, वो सिंपल आपके जान पहचान के हैं. और क्लिक्स, ठीक, क्लिक्स कौन होते हैं? जो आपके साथ में काम करने वाले हैं. ठीक है, जब आप उनको लेटर लिखेंगे तो वो आएंगे इनफॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में, और जो पर्सनल लेटर भी जिनको कहते हैं. ठीक है, आपके उनसे पर्सनल रिलेशंस हैं, उनको आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, यानी किसी भी फॉर्मेलिटी में आप नहीं पढ़ेंगे. आपने किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरह से किसी भी ज़्यादा शब्दों की परवाह किए बिना उनको आप लिख सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इनके साथ है, वो आपकी बात को माइंड नहीं करेंगे. सो यू आर हैविंग more freedom. So these are informal letters. So let us come to now formal letters which are in your syllabus. So these are those letters which are written to officials. Okay, any officer which is heading the department of any government department or private department, or editor, news editor, or newspaper editor, business houses, और एनी क्लिक्स और मेयर एक्विटेंसेस. ओके, सो जो थोड़े बहुत जान पहचान के हैं, तो ये जो लोग हैं ये आपके बारे में कुछ नहीं जानते, दे आर टोटली स्ट्रेंजर्स टू यू. ओके, सो इनको जब आप लिखेंगे तो इनको आप फॉर्मल यानी औपचारिक भाषा में लिखेंगे, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड. आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, दे डोंट नो अबाउट यू, सो यू हैव टू राइट वेरी केयरफुली फॉर्मल लेटर्स इन ए गुड लैंग्वेज, इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, and in a correct English, and using formal language. Formal language means आपने बड़ा ध्यान रखना है कि इनको क्या चीज़ तो लिखनी है, क्या किस चीज़ को कितना एक्सप्लेन करना है या कितना एक्सप्लेन नहीं करना है, राइट? तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है. ये बेसिकली दो कैटेगरीज हैं लेटर्स की. सो सबसे पहले आई विल लाइक टू टेल यू द फॉर्मेट ऑफ दिस लेटर, राइट? What should be the format? Because in the formal letters, format is most important. So first of all, you would have read this thing in your previous classes also. So first of all, you are to write your address of the sender. जो भेज रहा है उसका पता. यहाँ कौन भेज रहा है? आप भेज रहे हैं. ठीक है, तो ये इसमें पहले आपका एड्रेस आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर दैट you are to see that you are to follow this pattern where your all the lines are aligned to the left portion of your page, left align, right? This is the left part of the page, this is the right side of the page. So your whole page, your whole matter should be aligned to the left side. Okay, so basically we nowadays follow this pattern. Earlier we used to follow the pattern in which we used to write from here, then we start second from here, third here, fourth here, then we come for dear sir here, like that. That was indented. Okay, and we put your sign in this corner, right hand side. So now that pattern is not mostly followed, and this pattern is followed. You can choose any pattern, but stick to that pattern which you have started. So forget about the other pattern, we have to follow this pattern only. So first of all, you have to write your address. There should be no comma and no full stop except this. Okay, you will see that no comma or no full stop is there. Okay, full stop will be there because sentence is the grammatical requirement of the sentence to have full stop, but otherwise there is no comma or such thing in the whole body. So remember these things. First of all, the sender's address, then you will put the date like this. Either you will put the date like this, in this you will write 14th or 2nd or 3rd
whatsoever RD, this thing you will write TH, and the other way to write this is you will write October, then you will write only 14, TH you will not write. Okay, this you can also write like this. Okay, this or this. Then you will write address. Address means address of that person who is going to receive your letter. Here letter is addressed to editor of Dainik Bhaskar daily newspaper. Then in short his address, where he sits, where his office is, and the name of the city. Then you see there is always some space between sender's name and date and address, and here also between address and subject, and here you see between subject एंड सैल्यूटेशन कैसे कहते हैं कि हम कैसे उसको सैल्यूट कर रहे हैं, क्या कह के उसको बुला रहे हैं, दिस पर्सन को, राइट, जिसको हम लिख रहे हैं. तो यहाँ पे हम सपोज डियर सर, मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा, आई विल टेल यू द सैल्यूटेशन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पर्सन. ओके, देन आई एम जस्ट ब्रॉडली टेलिंग यू द फॉर्मेट राइट नाउ. सेंडर्स एड्रेस, डेट, recipient's address, then subject, this salutation, and this is called the body. Okay, this whole is the body of the letter. इसमें in which there are 1 to 3 paragraphs. Then the part of the body, this last paragraph, when you going to close your application or letter, this thing is called closing. Yours truly, and how do you end your stress, your conclude your whole body, what you are going to say, and last also you will repeat that thing. Okay, so that is your closing of the letter. Then you will write at the end of the letter your name. So these are the components of the letter to be written. We will again come to this letter, the body of this letter I will explain to you as a sample. Okay, the rest of things I am going to explain you in the next video.